तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल डी यू हाँ पे। तो आज हम करने वाला आपका चैप्टर नंबर 8 ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी। और चैप्टर नंबर 8 ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी में हम क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट इज एन एसेंशियल एसेट्स ऑफ द एक्वायर्ड टू बुलेट द वेल्थ। इट इज़ द defined as a process of utilizing the money acquired an asset in anticipation in a benefit in the form of a return in future। इन्वेस्टमेंट जो दो तरीके के कैटेगराइज होते हैं, रियल एसेट एंड फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट आर द मीन्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ मनी एंड फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर्स, बॉन्ड, एक्चुअल पेमेंट ऑफ फंड एंड डिवेंचर। रियल एसेट क्या होता है, रियल एसेट इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल एसेट लाइक लैंड, हाउस, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड। Investment and speculation. The investment is a process of purchasing the security and a real assets with a long-term perspective in mind. The value and return of the stable prediction. Speculation can be defined as the buying and selling of the security with a high uncertainty and a return and values. Objective of investment क्या होता है, to increase the current इनकम, ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टर, प्रॉफिट कमाना, लिक्विडिटी मेंटेन करना, टैक्स बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, सर्विटी ऑफ प्रिंसिपल्स। देन कम्स टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज द कोर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इट इज अ प्रोसेस दैट मैचेस हाउ द accumulate the money to meet the financial goals and objectives. Investment plan is a statement that represents how the accumulated financial resources will be invested in a different financial product and to achieve और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टारगेट। बेनिफिट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो दैट मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मीटिंग द मेजर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दैट विल acquire the future, provide the good standard of living as a money and to and so invest in mitigate the impact of a time value of money and tax benefit। इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होता है आपका सेटिंग अप द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डेवलपिंग द लिस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यू एंड अवेलेबल, investment analysis on a basis of the risk and return, creating the portfolio that will maximize your wealth, portfolio revision and evaluation. Risk and return are considered to be the inseparable. They are considered to be the complicated complement and to each other. Higher of the risk and higher the return, and lower the risk, lower the return. रिटर्न कैन बी कैटेगराइज इंटू अ टू पार्ट, हिस्टोरिकल एंड दी एक्सपेक्टेड। हिस्टोरिकल क्या होता है, इनकम प्लस चेंज इन एसेट का जो प्राइस होगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका डी प्लस में पी एन अपॉन में पी ओ एन। पी ओ क्या होता है, बेस प्राइस, और पी एन क्या होता है, न्यू प्राइस। तो इसका हम केस एग्जांपल देखते हैं, लाइक इन्वेस्टर हु वांट टू नो अबाउट रिटर्न टू एज स्टॉक्स ए एंड स्टॉक बी। तो इसका इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमने फॉर्मूला लगाया और हमने देखा एक का है 20%, एक का है 11.6%। ठीक है, expected return of investment and the investment environment is uncertain and volatile, therefore the return can be vary according to the market situation। के हिसाब से क्या हो सकता है, वैरी हो सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट हुआ, देखिए 6% हुआ, दो की प्रोबेबिलिटी है, इसको हमने माइनस किया और हमने अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, देखो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, इन केस ऑफ अ रियल रेट ऑफ रिटर्न इट गिव द इम्पोर्टेंट टू द इन्फ्लेशन रेट। In order to find out the real estate return, inflation should be reduce the return। The real rate of return जो होता है आपका 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन में 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, इसमें आप माइनस में कर दोगे 1, तो आपका आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, टैक्सेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट decision होता है। The income earned through the investment is a subject to the tax and therefore in order to invest in a particular way, investment option पोस्ट टैक्स रिटर्न शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। पोस्ट टैक्स रेट क्या होता है आपका, पी टैक्स रेट 1 प्लस में आपका टैक्स रेट होता है। रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क क्या होता है, रिस्क इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। द रिस्क अराइज because neither the return is being fixed nor can be predicted in advance. The prime reason for the risk is the actual return goes into the equal and the expected return. Risk and uncertainty. Risk can be calculated and estimated on basis of some of the previous data and information available, and uncertainty cannot। Type of the risk कौन कौन से होते हैं, risk can be categorized in two types। कैसे, आपका पहला आता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क भी बोलते हैं। इट इज़ द इनहेरिटेंट रिस्क एंड प्रेजेंट इन द मार्केट और इकोनॉमी एज अ होल। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है,
also known as a specific risk or the diversified risk. An unsystematic risk is the risk that affect the particular company, it is not present in the market, उसको हम लोग बोलते हैं unsystematic risk. Sources of risk क्या होते हैं? There are many causes or promote the risk. They are the market risk and internet risk. मार्केट रिस्क क्या होता है? आपका सिस्टमैटिक रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? दिस रेट रिस्क अराइजेज ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट दैट अफेक्ट द वैल्यू of the investment. Then comes your inflation risk. Inflation risk, also known as a purchasing power risk. A purchasing power of the money shall decline because due to the increase in the inflation. Then comes your business rate and unsystematic risk. This risk is present all business. Then comes your financial risk. Financial risk refers to the possibility that the firm not able to fulfill the financial committed to and to pay the debt due to the फाइनेंशियल डिफिकल्टी. मेजरमेंट ऑफ रिस्क कैसे होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द मेजरमेंट ऑफ रिस्क आप कैसे करोगे? रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अ वेरिएंस ऑफ एनालिसिस. द समेशन ऑफ आई की पावर -1 और फिर आप करोगे ब्रैकेट में आर आई माइनस में आर डैश की होल स्क्वायर अपॉन में एन करोगे, उसका अंडर रूट कर दोगे तो आपका निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. वेरिएंस निकालने के लिए 1 ब्रैकेट में आर आई माइनस में आर डैश का स्क्वायर कर दोगे आप. ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा. इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी आउटकम जो सामने फॉर्मूला लिखा है आप उसको समेशन करके अंडर रूट निकाल दोगे तो आपका निकल जाएगा ईजिली. अगला हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. चैप्टर नंबर 8 हुआ आपका समाप्त ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी.